प्लस आपले होम परत एकदा सगळ्यांना नमस्कार. म्हाका अध्यक्षान सांगला स्वीट आणि शॉर्ट जावनी सुटसुटीत उलय. सो दोन उतरां जी सांगचीच पडटली. सरजी, आय टेक युअर परमिशन टू टॉक इन कोंकणी बिकॉज कितें आसा पोट पिडकीन उलोवपा जाय. आतां पप्पान म्हाका सदांच सांगला चिराग अपुरबाय म्हणटी इंग्लिशीन आपूण करपाक शकना, आपूण कोंकणीनूच अपुरबाय करपाक शकता. तशेंच म्हाका दिसलें म्हाका जो पळय आज राग काडपा जाय आमचे दिगंबर कामतीचेर तो म्हाका इंग्लिशीन काडपा जावचो ना. ताजे खातीर म्हाका कोंकणीच उलोवची पडटली. मडगांवकारांनो, आज मडगांवां दोन आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड. लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आणि दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो चिराग नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. दुसरो आवाज प्रत्येक मडगांवच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय हो गडगडत आसा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला, आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आजपर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 जाले हो शेळलो. आणि तो भिलाय बी कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक असतात, सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या, कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना. ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचे ते डायरेक्ट कनेक्शन ना. हेच एक तुमकां सांगता कित्याक ते डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना. आनी म्हाका ते कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें थांबप ताका पावला म्हाका खबर ना, पूण म्हाका पावतलो, चिराग नायकाक पावतलो आनी सगळ्या मडगांवकारांक पावतलो. बरें, चड वेळ घेनासतना एक आतां मडगांवचो नक्षो तुमकां सांगता. सर तुमी कोणाकूय दिसतले ते मडगांव म्हणून, ते मडगांव न्ही, ते फातोर्डा. वो ते मडगांवच म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुम्ही गेले एक बरो वाठार तो कुडदरे हे मडगांव न्ही. हेवटेन समज जर तुम्ही गेले ते नावेली, आणि हेवटेन समज जर तुम्ही गेले एक कोलवे बाणावले, आणि हे मदी जे पडला खाण हे आमचे दिगंबर कामतीले 32 वर्सां कुशिल्ले मडगांव. आणि हे तो तुमकां दाखयना. आज हांव दोनूच एक पॉइंट तुमच्या मुखार मांडटा, म्हणजे 2 शब्द काबार करता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांव राजकारणान कितें आयलो. हांव 17 वर्सां म्हज्या बापाय बरोबर धंद्यान आसा. हांवें समाजकारण पळयलें, राजकारण पळयलें. भितरल्यान एक फ्रस्ट्रेशन, हाका गाळी मारून दिसली म्हाका. दुसऱ्यांक विचारलें तुमकां कापासता दिसा 1.5 वर्स पयलीं गिरीश बाब हांवें 4 जाणां विचारलें, ताका ताजे कानार घाले शिवाय मडगांव सुदारचें ना. तुमकां आसा कापासतात हांव तुमचे बरोबर आसा. म्हाका लोकांनी सांगलें आमकां भानगड नाका. सो त्या भानगडीन हांव पडलो. कित्याक दॅट इज फ्रस्ट्रेशन. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपा जाय बाब दिगंबर कामती की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना.
आणि ही ताजीच न्ही तुमची चूक. कित्याक ज्या दिसाक तुम्ही पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना जो म्हाका राग येतालो म्हूण आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशेन बाब अध्यक्ष सांगप शक्य जायना. आता मडगांव मोडेल मडगांव म्हूण करताय बोर्ड चकचकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे. अरे हे पळया मरे तुम्ही पळया 4 हुशार लोक मरे तुमचे बरोबर आनी हाका कांयच आतां रावंड फोंड ब्रिज पडलो हाका कांय फरक पडना. वो कितें स्कूल कितें स्पोर्ट्स हे चालू आहा. अरे बाबा एक कितें तरी एक कॉन्क्रीट करून दी आमकां. हांगा मॅनिफेस्टो हांवें वाचलो म्हज्या बापायन म्हाका करून दिलो जो हांवें खूब रिवायज केलो कित्याक आमी तरणाटे ताजी मातशे वेगळे ओल्ड जनरेशन. पूण ताणें म्हाका एक सांगलें चिराग हो कॉपी पेस्ट ना मॅनिफेस्टो. कित्याक ताणें हो केल्लो 1995 आनी दिगंबर काम केलें प्रत्येक इलेक्शनाक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. सो आतां ताणें म्हाका कितलें सांगलां चिरागान 95 केल्लो समज जर मॅनिफेस्टो तूं कंप्लीट करता नथींग लायक इट. सो आतां हें सांगता हो जे पळय इव्हेंट करता हाजे कडेन मडगांव कॅपेसिटीन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. मडगांव इव्हेंट करपाक रविंद्र भवनान करता रविंद्र भवन फातोर्डा. ग्रावंडार करता एसएजी तें फातोर्डा आनी हेवटेन थंय परिकार स्टेडियमाचेर करता. बाबा तें मडगांव न्ही तें नावेली तुजे कडेन कितें आहा तुजे कडेन कांय ना. सो हांव एक स्पश्ट सांगता हांव हांगा उबो रावला. म्हाका आतां काँग्रेस आमचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्ष म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दितले काय ना पूण आमी पक्षा बरोबर रावतले. आज आमी 2027 उलयनात. नेक्स्ट इयर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आमी प्रत्येक जाण काँग्रेस पक्षांतलो तो कॅप्टन जावं आमचो सावयो बाब जावं सगळे अशे घटमूट बरोबर आसात आनी हाका आमी दोळ शिकयता. लास्ट एकूच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार डिफेक्शन हे कितें करता. काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो राम सुशेगाद तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा 1985 काँग्रेस तो 94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते शिरीष भाई कशे ताकाच मना पटले तुमकां सोडूच ताका कशें मना पटले कशें ताणें मॅनेज केलें दाम बाब जाणारे बाबा. परत 2005 काँग्रेस 2022 बीजेपी. Chirag and me were colleagues together. We studied, and he's a friend of mine. आणि म्हाका दिसता की आज जेन्ना एक तरुण यंग ब्लड यंग person who has achieved a lot at such a young age, जेन्ना म्हाका दिसता we talk about him a go-getter, someone who I have also seen personally after following the footsteps of his father. पण त्याच्या रोगतान क्रांतिकारीचे रोगत आसा. त्याच्या रोगतान म्हाका दिसता एक बरो ओरेटर. पयलींच जेन्ना तो उलयलो आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की द थिंग इज inbuilt mechanism in him, and they have always been with the Congress party. And this family basically is involved, right? If you look at the history, they've always been involved with celebrating India's diversity. And then आमी डायवर्सिटीचे उलयतना this family जी डेमोक्रेसी आमची देशाची आहा जावं डायलॉग आणि मेन म्हणटाय ते डिसेंट, समथिंग टू डिसेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, समथिंग दॅट इज नॉट राईट. दिस फॅमिली हॅज ऑलवेज इन द पास्ट ऑलवेज डिसेंटेड, हॅज फॉट फॉर इक्विटी अँड जस्टिस. आणि म्हाका खात्री आहा की विथ द induction of Chirag in the Congress party, the Congress party has definitely got an asset in the organization field. And there has to be a change. The change has to come. Getting
fresh blood and energizing is something that the party president, Amit Patkar, me, our desk in charges, all associated with the Congress party feel. Mahodo Bonido, I, on behalf of the Congress party, being the CLP leader, congratulate and welcome Chirag to the Congress party. I believe this is not an easy fight. It is like a crown with thorns. You've seen a lot of things that you've achieved, maybe in your social work, in the field of business, but when you are जेन्ना तूं एक आम आदमीच्या लोकांचे प्रश्न जेन्ना सुदारप करपाक जेन्ना तूं एक पाऊल मारता, it is definitely a different ball game. But म्हाका खात्री आहा that genetically in your blood you have what it takes to make sure that Margaon gets and deserves better. आज खास करून जेन्ना उलयता, I can see a lot of thinkers, a lot of doctors, and a lot of people associated with Goa's freedom struggle, social activists. And म्हाका दिसता की a lot of people, men and women, are present here whose heart beats for Goa. This is something that is very important at this particular junction. खास करून if you look at the last decade, एक erosion झालेले आसा within the system of the constitution, within our democratic process. Chirag spoke about defections, but the whole idea is there is a threat to our Samvidan. And jenna regime absolutely left to the dogs. People are dying. There are several doctors here. That golden period for Ashillo, why was it made a district hospital? The MLA has failed miserably to get this as recognized. What is a district hospital? I asked the health minister that you call this or downgrade it into a PHC. You're calling it a district hospital. I'm not blaming the doctors because they are doing their best. They lack their staff, whether this is an ego battle, whether the chief minister has put the health minister on a starvation diet, is something that the people of Madgaonkar should decide. Kesli सुविधा हा दुसरे कडेन म्हाका दिसता की आमी चिंतपाक जाय की जे मडगांवांत कसलो infrastructure आहा, and the infrastructure that was there is basically crumbling. We talk about the intercity bus stand that was announced several years ago. What has happened to it? There is no Sadharan bus stand, no place to have a function. Chiragan उल्लेख केलो रवींद्र भवनाचो, दुसरो उल्लेख केलो SGPDA ग्राउंडाचो. Is Margaon getting the support for the business and the trade? It is known as the cultural capital, a trading capital. तुमकां support मेवता काय कितें? तर म्हाका दिसता की मडगांवकारान सदांच आमदार जो पट तुमी सिलेक्ट केला, सदांच तो विधानसभेन you look at the Goa centric picture. The MLA of Margaon is supposed to raise Goa centric issues. Several MLAs in the past, Vasudev Sarmalkar, Babu Naik, Udaybab Bhemre, they've raised issues pertaining to Margaon, but also you look at the Goa picture because you are the deciding factor. I do not know why your MLA is silent or whether God has told him to remain silent. But, Magadista, I welcome Chirag today. We will definitely strengthen the organization of the party with your capability. There is time. The municipality elections are also एक 8-9 महिन्यान 10 महिन्यान election municipalities are. Let us all strengthen the Congress party. म्हाका दिसता clear message of Spagde Goimbol, and I believe that today definitely we have inducted a leader who's got
He is a qualitative leader. He's got qualities, and by his quality, I believe, war zone. Whether there is a war happening in Panjim and 1,500 कोटी लोकांले पैसे 1,500 कोटी have been put in the dustbin. इतले corruption, smart city आले ते smart city कोण उडयले, पाड घातले. You look at the unemployment figures. We as youth, आज आमचो फुडार, भुरग्याचो फुडार, unemployment is one of the highest and the biggest issue. These issues as figured by CMI, by Niti Aayog, पण या सरकाराक, या दोतोर प्रमोद सावंताक कांयच पळोवंक ना. The figure is increasing, वाडत आसा. बेरोजगारी हे वाडत आसा. हो परिवर्तनाचो सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकर म्हणटालो बेकारी भरतो दितलो 2012 म्हाका उगड आसा, हांवूय बसलोलो 2012 आनी म्हणून लागलो एक युवाक 5,000 10,000 म्हयन्या दितलो. आज अनएम्प्लॉयमेंट, the way figures are rising and the youth are forced to move towards drugs, to move towards crimes. अरे गावात जेन्ना एक मर्डर जाताली, व्हडलो बोर्ड जातालो, आता दीस रात मर्डर, रेप. आणि what is Goa? What are we showcasing Goa to be? The rape capital, murder capital of our country. हे गोंयांत जाताले काय कितें? म्हाका दिसता ह्या सरकाराक जोड 14 वर्सां जाली. They have failed and absolutely sold Goa with the way lands are being converted. हे दुयेंस जे गोंयकाराचे हाडले या बीजेपी सरकारान, ज्या पद्धतीन लँड कन्वर्ट जाले, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड, शेतां, बाटां, एनडीझेड, हे ते मडगांवां, धोडी बीचेस, हे सगळे. This is not in the interest of Goa because there is no scientific study relating to Goa's carrying capacity. Do we need Goa to be another Wayanad with the landslides? Is something आम्ही प्रश्न केलो. Last assembly session, no improvement. बिलां हाडटा, जायते भाशेन बुलडोज कोत्ता, सारखे असेंब्ली आहा तेजी सारक्यान कांय दवरना. नो प्रिंसिपल, नो डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तर म्हाका दिसता आज आमी चिंतपाक जाय, खास करून मडगांवचे उलयतना. आयच्या दिसाक एक न्यूज जालो की रवी सहभागी ते जाल्ले. हाच्या वयल्यान कळटा की तांची आयडियोलॉजी, तांचो जो विचार आसा हो सदांच काँग्रेस पक्षा बरोबर, काँग्रेस पक्षाच्या आयडियोलॉजी बरोबर आसा. एक व्हिडिओ मॅडमीन उल्लेख केलो, आतांय दाखयताली लोकसभा टायमा वयलो. आय थिंक दॅट इज पास्ट. आणि फाटल्या दिसांनी आमी पयले आमचो बाब समील हांगा बसला, हू इज अ बिझनेसमॅन, जो एका राष्ट्रीय पक्षाचो गोंयचो कन्व्हेनर आशिल्लो. आज म्हाका दिसता हे असले लिडर जे बिझनेसमॅन, जे एज्युकेटेड, रुटेड आसा, आणि खास करून म्हाका दिसता करेजियस. आय थिंक प्रत्येक मनशाक गायडन्स हे जाय, प्रत्येक मनशाक मार्गदर्शन दिवपी मनीस हे सारखे मेळपाक जाय. म्हाका दिसता चिराग बाबा भितर ती एनर्जी आसा. ही हॅज दॅट करेज टू फाईट अगेन्स्ट अ पर्सन who has been manipulating or who has been operating all these Madgaonkars for last so many decades. आणि जेन्ना डिफेक्शन जालें आणि जेन्ना 8 आमदारांनी जेन्ना विश्वासघात केलो तेन्ना इट वॉज अ टफ टाइम. आय मीन 3 आमदार आमचे जे बाकीचे पक्षाचे पदाधिकारी आशिल्ले, म्हाका दिसता गेल्ली 1.5 वर्स 2 वर्स आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वचून खंय तरी संघटना बाबा लोकांक लागीं हाडपाचो एक प्रयत्न केलो. 2024चे लोकसभेचे जे इलेक्शन जालें, त्या इलेक्शनाक रायट कॅन्डिडेट दिवप आनी तो निवडून हाडप. म्हाका दिसता हातूंत पुराय साश्टीचे, पुराय साऊथ गोवाचे सगळ्या लोकांचे म्हाका दिसता हातूंत सहभाग, तांचे एफर्ट्स हे आमकां दिसून आयले. एक म्हण आशिल्ली, जेन्ना पल्लवी डेंपोक जेन्ना डिक्लेअर केले एज अ कॅन्डिडेट, मडगांवचे लोक, मडगांवचो आमदार आणि मुख्यमंत्री
सांगताले की मडगांवान आमकां 10,000ची लीड मेळटली म्हणून. आणि तेन्ना आमी बसून सदांच युरी कडेन हांव डिस्कस करतालो की अरे मडगांव कशें टॅकल करपाचें. मडगांव बिकॉज मडगांव वॉज वन प्लेस वेर वी थॉट की मडगांवांत जर तर मातशें हारले जाल्यार देर वर पॉसिबिलिटीज ऑफ लुजींग दी लोकसभा सीट. पूण हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे जे आज हांगा बसल्या हे सगळे मडगांवकारांचे एफर्ट आशिल्ले. मडगांवकारांचे म्हाका दिसता एक क्रेडीट तुमकां वचपाक जाय की तुमी ती 10,000ची जी लीड बीजेपीन एक्सपेक्ट केल्ली ती खंय तरी तुमी 1200चेर 1300चेर हाडली आणि काँग्रेस पक्षाचो साऊथ गोवाचो उमेदवार कॅप्टन एरियाटो फर्नांडीस साऊथ गोवाच्यान निवडून आयलो. आनी म्हाका दिसता चिरागान येदोळ म्हणलें की ह्या दिसांनी दोन दीस जाले दोन आवाज गजगजता काय तरी म्हणटाने उल्लेख केला गडगडटा म्हणून. म्हाका खात्री आसा की आज दोन मनीस न्हिदचे ना. एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो सदांच सांगता भिवपाची गरज ना, आज ताका कळटलें की आज मडगांवान भिवपाची गरज आसा. आणि दुसरो तुमचो हांगाचो जो आमदार आसा तो म्हाका दिसता फाल्यां ताका देवा कडेन उलोवचें पडटलें की बाबा खंय कितें हारलें किंवा खंय कितें करचें पडटलें. कित्याक आज ज्या संख्येन नामनेचे मडगांवचे लोक जे आज भायर सरल्यात म्हाका खात्री आसा की खंय तरी मडगांवां येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसूं किंवा येता त्या विधानसभेचे इलेक्शन आसूं हांगा रेव्होल्युशन हे जातलें. आज बाब चिराग जो जॉईन जाता दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल ओकेजन. म्हाका दिसता दिस इज अ मुवमेंट ऑफ रिन्युएबल रेजिस्टन्स एंड टू रिझॉल्व वॉट हॅज बीन हॅपनिंग for last so many years in मडगांव. चड वेळ घेना परत एकदा हांव बाब चिरागाक परबी भेटयता. आमचो तेंको हो ताका आसतलो आनी म्हाका दिसता आज असले एज्युकेटेड रुटेड करेजियस लिडर्स जेन्ना पक्षा बरोबर जॉईन जाता किंवा पक्षान सामील जाता तेन्ना तांचे पक्षाची मजबूती वाडटा. म्हाका दिसता मडगांवान आमकां सगळ्यांक इन्क्लुडींग आमचे जे एक्झिस्टींग टीम आसा ताच्या बरोबर मेळून म्हाका दिसता चिराग तुकाय खूब काम करपाची हांगा गरज आसा. कित्याक आज तुवें सांगलें की मडगांवान आज कांयच जाल्लें ना. जे तो दाखयता तें सगळें फातोड्डान पडटा. आज मडगांव इज द एपी सेंटर ऑफ एंटायर साऊथ गोवा. आज पुराय साऊथ गोवाचें कमर्शियल कॅपिटल इज मडगांव. पूण एज अ मडगांवकार कितें त्रास जाता हे तुमी भोगिल्ले आसात. म्हाका दिसता आज जो गोंयच्या जनतेचो जो राग जो आसा इन टर्म्स ऑफ वेरियस म्हणजे आज प्रत्येक मनीस आज पिडीत आसा. आज लोक हेल्पलेस जाल्या आणि म्हाका दिसता ह्या चळवळींतल्यान जे आमी कुंभारजुव्याच्यान पयले आज आमी मडगांव पळयतात की एक तडफदार युवा नेता आज ताका खंय तरी दिसता की काँग्रेसीची आयडियोलॉजी आमचे लीडर श्री राहुल गांधी ज्या पद्धत उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है. जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है. जिस तरीके से यहाँ कहा गया है कि चिराग हम आपके हवाले भेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को प्रदेश को, तो हम ये भेंट स्वीकार करते हैं और अच्छी तरीके से चिराग के माध्यम से मडगांव में नहीं पूरे गोवा में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी ऐसे हम उम्मीद करते हैं. उनकी फैमिली के बारे में यहाँ पे कहा गया कि उनके पूरी खानदान जो है, जो दामोदर जी और हमारे दत्ता साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पिताजी, उन्होंने जिस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपने जीवन में कोशिश की, वो एक ही बात थी कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है, जो आइडियोलॉजी जो है वो सभी को इस देश में साथ लेके चलने की आइडियोलॉजी है. इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को सभी धर्म के, जाति के सब लोगों को एक साथ लेकर चलना है, तो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही हमारे देश को मजबूत बना सकती है. कुछ लोग उसको अलग तरीके से
अपने खुद के लिए सत्ता पाने के लिए कुछ अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो देश में राजनीति कर रहे हैं, स्टेट में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो विचार हमारे सभी के लिए, और मैं समझता हूं कि गोवा और जो हमारे सामने बैठे हैं कि क्वालिफाइड सभी मडगांव के लोग हैं जो सोच सकते हैं कि इस देश में क्या होना चाहिए, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, किस तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे अहम हमारे लिए उसमें बात है कि देश में सभी जाति धर्म को एक साथ अगर हम ले चलते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी बात को लेकर राहुल जी गांधी ने अब जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो का जो नारा दिया, उसके पीछे कोई भारत टूटा हुआ नहीं था कि अलग अलग भारत टूट गया अभी जोड़ने का काम, ऐसी बात नहीं। दिल से दिल जोड़ो, सभी जाति धर्म के लोगों को जो फूट डालने की कोशिश उस विचारधारा वाले लोग अपने सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, वो इस तरीके से इस देश में बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, एक साथ होकर आगे चलना चाहिए। ये नीति हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है, और उसी बात को लेकर राहुल जी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चले। बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी का विचारधारा समझाने की जरूरत है, सब मैं नहीं समझता। छोटी सी बात है, डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर हमारे इसमें इस तरीके से बीज अगर कोई बोलते हैं कि ये धर्म का, वो धर्म का, वो जाति का, ये जाति का है, तो फिर हमारे देश का कौन होगा? देश के लिए कौन लड़ेगा? आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं उसको हमको रोकना है। और मैं समझता हूं कि मडगांव जैसे इस क्षेत्र के जो भी लोग हमारे सामने बैठे हैं, एक विचार सोच करने वाले सोच है सभी के पास कि किस तरीके से राजनीति आगे जाना चाहिए, कौन सी विचारधाराओं को हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के हमारे बच्चों के लिए कौन यहाँ पे सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये समझता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की झांकी में अपन आ जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं ये सही है, ये धर्म के नाम से तुम जोर जोर से आवाज लगाओ, घंटा बजाओ, ये करो वो करो, रोज पूजा पाठ करो तो तुम वहां पे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तुम ये करेंगे, इस तरीके से बात जो करता है, तो सबसे पहले एक दूसरे को लड़ाने की जो बात है, नहीं आप सोचो और उस बात को लेके घर घर तक लोगों तक आप पहुंचाओ। ज्यादा इसके नहीं, आज चिराग करके जहां यहाँ कहा गया कि चिराग यहाँ से इस विचारधारा को आगे बढ़ाओ, चिराग उस बात के लिए वरना इसको चिराग से वहां पे चौरा तैयार करने, किसी को ये करने का मकसद कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है कि सबको आपस में मिलाओ, एक साथ सब आना चाहिए। और ये अगर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ये विचारधारा है, तो इधर उधर जाने का जो काम कर रहे हो वो गलत है। यहाँ की गवर्नमेंट कैसी चलती है, कैसा नहीं है, यहाँ पे सेल्फ लीडर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हमारे गिरीश चौधरी जी ऑल इंडिया लेवल पे वहां CWSU सदस्य है, वर्किंग कमेटी में जो 30 लोगों की वहां पे मेजर लोग हैं, उसमें वहां पे गिरीश चौधरी जी बैठते हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट उनकी तरफ दिया हुआ है और उसमें लगातार वहां पे अपने विचार रखते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के मकसद जो है वो राहुल गांधी जी के विचारों में, हमारे खारगे साहब जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके विचारों से हमारे सामने स्पष्ट है, इसलिए हमें कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उन्हीं विचारों को लेके हमको आगे बढ़ना है। एक ही बात है, कांग्रेस हर वक्त ये चाहती है कि गरीबों का, वंचितों का भला हो, उसलिए हमें आगे राजनीति चलाना है, समता इस देश में लाना है। समता लाने के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए
और सब जिसके पास नहीं है उसको भी हक उनको मिलना चाहिए। यही अलग अलग तरीके से राहुल जी भी आपके सामने पेश करते हैं, हमें भी समझाते हैं, खड़गे साहब समझाते हैं, सोनिया जी गांधी हमारे नेता वो समझाती है कि हमें कोई आइडियोलॉजी हम नहीं कर रहे। हम कुछ आए हैं, राहुल जी आज या सोनिया जी गांधी आई है और टर्न कर रहे हैं, नहीं ये अब विचारधारा हमारी है, इसके लिए नहीं बैठे वहां पे अध्यक्ष के साथ। जो विचारधारा पंडित नेहरू जी की तरफ से चली आई है, जो हमने कांग्रेस पार्टी है कि सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चलो। 1952 में आपने देखा होगा तो उस वक्त इस तरीके से राजनीति आई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोई वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग अलग हो गए थे। उसके बाद ऐसी विचारधारा चल रही थी कि नहीं, यहाँ पे धर्म के नाम से अभी राजनीति चलेंगी। वहां पे आपको मालूम है जनसंघ खड़ा था धर्म के नाम से, हिंदू के नाम से, और मुस्लिम लीग करके मुस्लिम की पार्टी खड़ी थी। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सर्व धर्म को मैं साथ में लेके चलूंगा, देश के सभी को मैं साथ में लेके चलूंगा। अगर ये विचार आपको मान्य है तो मुझे वोटिंग करो, नहीं तो कांग्रेस को किसी ने वोटिंग नहीं करना चाहिए। हर सभा में उन्होंने कहा। उसके बाद 80% लोगों ने वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस को वोटिंग किया। वही विचारधारा है, वही खड़गे सब आगे लेके चल रहे, वही विचारधारा राहुल जी आगे लेके चल रहे, वही विचारधारा सोनिया जी गांधी ने सामने रखी है कि ये विचारधारा के आगे हमको लेके चलना है। इसलिए आप सभी यहाँ के चिराग के प्रवेश के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहूंगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमिटी, Chirag Bab and his family ideologically they're connected to Congress ideology for years together. Today Chirag might have just joined by becoming member of Congress party, of which his father was once upon a time the treasurer, state treasurer of Goa Pradesh Congress Committee. And at the time when the defection happened, today defection has become a very common in Goa. But it is time when some issue happened, and on moral ground, on the issue of principle, he resigned as the treasurer of Goa Pradesh Congress Committee, but never left Congress party or Congress ideology throughout. He worked not being the Congress, but being an outside force which was supporting Congress ideology throughout. I know Dr. Francis Colasso also present here. Datta Bab with Dr. Francis Colasso formed various organizations to promote our ideology. Whether it's Lok Shakti, Lok Andolan. He has also formed Madgaon First, so that better facilities and Madgaon could be a better place to live, because which is called a capital city. The way Parrikar government was doing atrocities on Goa and Goans, I think that is the time when it was very difficult time for Goa to fight back. Politicians were scared and they were afraid to fight back. It was Datta Naik and Dr. Francis Colasso who fought for Goa, who stood firmly against the atrocities of Manohar Parrikar and his entire party. They were arrested, they were put behind the bars, their business was raided. I remember Dr. Francis Colasso was a prominent personality all over Goa. Parrikar put his FDA team, entire team against him. For what? For just standing with our ideology, for fighting back for Goa. Datta Naik's factory, Monginis, was raided. And such battle they fought, and that is what is the background. I just wanted our in charge, both the in charge, just to understand from where Chirag is coming in this party. Every elections, it is this NGO which was led by Datta Bab and several other prominent
our ideology, India's ideology that they were promoting, whether it's on parliament elections, whether it is assembly elections, they were firmly with the Congress party that since then. I remember the recent, there are several defections. Isidore Fernandez resigned through the pressure of Manohar Parrikar, and we were fighting a by-election in Kanpon. I remember Datta Naik Bab and his entire team, we hired a house in Kanpon, and we were practically staying there to see that it was the initial defection that he was defeated. With such a contribution is there of Datta Bab Naik and Chirag's family. Chirag, I know him from childhood. He was my neighbor, and in Komba, it's very difficult to find. It was it was basically a MGP ward earlier, and then slowly it became BJP, slowly by and large. But today, when I see the people sitting in the room, I think आणि तो सारखो देव मानपी म्हणतो तो सत्य सांगता आपण देवा मानपी देवाक कसो म्हणतो पण जेन्ना महालक्ष्मी देवळां वचून वच दिगंबर कामत सोपूत घेता आणि सोपूत लोकांक दिता आपूण घेता सगळे आमचे कॅन्डिडेटांक दिता तो युरी आशिल्लो अमित आशिल्लो आणि सगळे कॅन्डिडेटांक तो सोपूत घेता महालक्ष्मीच्या देवळान हो पक्ष केन्ना डिफेक्ट करपाना आणि आमी कोणूच पक्ष सोडून वचपाना आणि हो फटींग इलेक्शन जातकर हो आमकां ब्लॅकमेल करपा लागलो पयली LOP आमी जेन्ना हे जाले हांवें म्हागेलें रेजिग्नेशन सेम डे अनाउंस केला that I will resign, taking a full responsibility. Then the party also leadership wanted to make some changes. He started blackmailing the Congress leadership that if I am not made a leader of opposition, that I have better options. The person who was made the chief minister within 2 years of his joining, he started blackmailing or threatening leadership that he has better options. And my granddaughter is saying that why you are not working with Modi. So indirectly was saying that if you don't make me leader of opposition, I have better option to leave. So when we sat in Delhi after this, deciding how to go about future, I think that time in charges also put it on table that he's saying like this, that if he's not made leader of opposition, he will has the better options. He had told me also that time that आपल्याक leader of opposition करना जाल्यार आपूण हे करतो. So that time decided if person has slightest this, we cannot be loyal to your party, and such person should not be given any important position. We had given him position, we had given full support. He was not ready to take the lead. He wanted to become chief minister, but he wanted all others to work for him. सगळ्यांनी काम करप आणि ताका मुख्यमंत्री करप. जसो 2007 एका कांयच करनासतना आयतो मुख्यमंत्री गेल्लो, 2005 भितर येयलो एका पावर मिनिस्टर गेलो, ऑल इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियोज वर गिवन, and 2000 within 2 years he was made chief minister, depriving that time the PCC president was Ravi Naik. पण ताका इतलो ग्रॅटिट्यूड ना की एका पक्षान फक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन केले ना म्हणून हो पक्षात सोडून नेगोशिएशन करता. We know that ED cases were going on him, his son-in-law for the money laundering, all the matters. I know there was pressure on him also. But the person, so Digambar Kamath, so देवाक फुडोवपाक शकता, वो केन्नाय कोणाकूय फुडोवपाक शकता. दत्त बाबान तेजे प्रत्येक इलेक्शनाक आनी ताका हेजे खातीर सगळे प्लॅनिंग आनी हें करपाचें बाबतींत पळयतालो. आयज चिराग आयज जॉइन जाल्या बरोबर आयज सांजची मेसेजी तो धाडपाचो जाल्यार चिरागाक आपणेनूच काँग्रेसीन धाडला म्हणून. सो यू चिराग बाब यू हॅव टू बी केअरफूल विथ दीस. तेणे आयजूच मेसेज सांगपाक कॉमेंट्स केले आसतले चिराग हो आमचो अजून दत्ता बाबानी आपण सारखे क्लोज आमी कसा अजूनय आणि चिरागाक आपणेनूच काँग्रेसीन घालला. मुखार की तुमी काय टेन्शन घेऊ नाका. हो तेगेलो वर्करांक ताणें आयज सांगपाक कॉमेंट्स केले आसतले काय सांगले ऑलरेडी आसतले. असो हो फुटिंगांतलो फुटींग मनीस. ह्या दिगंबर कामती पातयेवपाकूच जायना असो फुडीकर हांवें तेजे बरोबर क्लोजली काम केल्लें आसा. तो केन्ना कोणाक विकतलो आपल्या स्वार्था खातीर हें तेजे सायडी मनशां आसता सुद्दां कळपाना केन्नाच. असो सामको भितरले तकलेचो मनीस
मडगावची सिटीची वाट लावपाक आणि गोंयची सुद्धा वाट लावपाक 5 वर्सां मुख्यमंत्री गेलो म्हाका दिसता आमी व्हडली मिस्टेक केली त्या टायमार आणि त्या हेतूंतल्यान आमी खूब पार्टी फाटल्यान गेली कारण त्या टायमार 22 आमदार आशिल्ले आमी एका मुख्यमंत्री केले आणि एजंडर आमी इलेक्शनाक गेले आमचे 9 आमदार जाले म्हणजे 22 आमदारांतल्यान 9 आमदारा कडेन हे एंड पावयल्ले आसा सो चिराग बाब आमी सगळे एक जावन फायट